Welcome to Brewing Knowledge Friday. Today is the 15th of August. It's a beautiful day when we talk about independence. And independence only comes from building up your human brain, from reading, from learning. And as you become more knowledgeable, you actually become more confident. So if you look at the personal and social development map, which we have on our website at Good Schools Alliance, the first thing is you develop an identity. And identity leads you to independence. So if you look at the 10 areas of personal and social development on the Good School Alliance website, have a look at it at your comfortable time, schooloducation.com. All those 10 things help you become independent and they form a part of your working memory. Last time we talked of how memory is stored, how we are able to distinguish things. So today we will be able to read little more. I have put a little summary in your WhatsApp. Working memory. All long-term memories are potentially available to us when we need them, or frustratingly not, as happens to us all at one time or another. कभी आपको कुछ आप जितनी भी कोशिश करें कुछ रिट्रीव नहीं कर पाते कुछ याद नहीं कर पाते हो आपके ब्रेन में होता जरूर है तो उस वक्त आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं you will agree that all long term memory is not in your conscious awareness all the time. That would be like reading every word of every book in a huge library at the same time, which is impossible. So, when you are aware of some memory, when you are thinking about it, that bit of knowledge has been retrieved. The space in which this occurs is another memory system called working memory. सो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस वक्त कंप्यूटर में पूरी किताब इसमें है किताबें इसके अंदर हैं परंतु हम एक पेज पे आ गए इस वक्त जो आपकी स्क्रीन में विजिबल है जी ये इस वक्त आपकी वर्किंग मेमोरी है जो आपकी स्क्रीन पे है केवल इतना ही है जो आपकी वर्किंग मेमोरी में जो स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं बाकी सब इसके पीछे छुपा हुआ है यू कैन थिंक ऑफ दिस काइंड ऑफ मेमोरी एज सिमिलर टू वर्किंग ऑन एट अ डेस्कटॉप देखो वो यही कह रही है ऑन द डेस्क is some information from long-term memory as well as some information from your senses, new incoming information. You are working on whatever is on your desktop. But since it is rather small, you cannot focus on more than a little bit at a given time. If something new comes along, a new thought from the long-term memory or a new sound from outside, you will get distracted. We are sitting here. If I get a ping on my phone which I've just put on silent, it will distract me. So what I normally do when I take a session, I put my phone facing down and on silent, so even the screen doesn't distract me. To get the best of your working memory, you have to have concentration, and that's what reflection is all about. You will get distracted because the new information will cover your desk and the old material will fall off. And the only way to keep material on this desk is to keep working on it, thinking about it, or rehearsing it. In this regard, working memory is definitely not like a desk. There are things on my desk that have been sitting there for months and I've done no work on them whatsoever. Thus, the working memory system is of limited capacity and duration. In the sense that, unlike a long term memory, it is not if you stop giving your attention to it, but it is a space for new learning to happen. So on your desktop, you have to have space, and that is the key. So it's important for you to look at that. Sorry, I just ended up pressing wrong. So we will go back to the chapter. Yeah, memory, and we were on page 65. Okay. So this distraction, it happened in front of you just now. It got us all lost. Why? Because I ended up pressing the mouse while picking up something in my hand.
The only to keep material on this desk is to keep working on it, thinking about it, or rehearsing it. In this regard, working memory is definitely not like a desk. There are things on my desk that have been sitting there for months and I have done no work on them whatsoever. Thus, the working memory system is of limited capacity. And thus the working memory system is of limited capacity and duration in the sense that unlike a long-term memory, it is not if you stop giving attention to it, but it is a space for new learning to happen. So let's go ahead and find out how this happens. It is best to think of working memory as a dynamic space with both storage and processing parts to it. अब हम मेमोरी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो वर्किंग मेमोरी पे आ गए हम मेमोरी का एक हिस्सा है वर्किंग मेमोरी डायनामिक स्पेस मतलब चलती रहती है फॉर एवर चेंजिंग वर्किंग स्क्रीन जो है आपका बदलता रहेगा डेस्कटॉप बदलता रहेगा with both storage and processing parts in it. If you are more efficient with processing the work on your desktop, you can store more on it. For example, if you organize your papers into stacks, one of your bills, one of for lists, one of letters, you can work more easily and efficiently and with more material. So if you have a computer screen or a phone, you can stack up your files and documents. So next time you sit in front of a desktop and you choose the display as stack, स्टैक में क्या होगा वो फाइल्स इकट्ठी कर लेगा फाइल्स का ढेर बना लेगा जब उस स्टैक पे आप क्लियर करोगे इट विल ड्रॉप डाउन इनटू ऑल द फाइल्स एंड देन यू कैन ओपन more files. So that's what he's trying to explain you. You can work more easily and efficiently and with more material. In much the same way, when information is working memory is organized efficiently, more can be stored. This organization is dependent on information available in long-term memory. And here it is simple example that will help clarify this. If you hear a list of 8 random digits, an unfamiliar phone number say, and you cannot immediately write it down, you must maintain it in your working memory by repeating it to yourself. This 8 digit number will strain the limits of your working memory, and any more digits would become difficult, if not impossible, as you must have experienced when you try to retain a new mobile number in the same way. But if the first 5 digits of the mobile number are the same as your friends, you will easily be able to hold 10 digits in working memory. The first 5 digits become a chunk and therefore a single unit. Any kind of organization helps to increase the capacity of working memory so that it is easy to remember a string of 6 unconnected letters as a string of 6 unconnected words. Let's see what Swati is saying in this photo. Swati, have you called this girl Swati? My number, it is as easy to remember 98765 43210. Now close your eyes. Do you remember the number? It's not going to be easy. Thus, the capacity of working memory is a function of both process and storage. It has to be measured using the task that requires you to remember items of information while at the same time performing some mental task. A good example is the sentence span task, where you listen to a series of sentences, judge whether each is true or false, and at the end of the series, you have to recall the last word of each sentence. As the number of sentences in the series increases, you will naturally find it harder to recall all the last words. At the point where you begin to make errors, you have reached the limit of your working memory capacity. थोड़ा सा स्क्रीन पे ध्यान दें और ये पैराग्राफ का लास्ट 2 लाइंस पढ़ें. As the number of sentences in the series increases, you will naturally find it harder to recall all the last words. At the point where you begin to make errors, you have reached the limits of your working memory capacity. आपके स्क्रीन पे लिमिटेड इंफॉर्मेशन आ सकती है, इसलिए आफ्टर दैट देयर विल बी अ स्पिल ओवर. वर्किंग मेमोरी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. अब ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वर्किंग मेमोरी को कैसे यूज करता है आपके क्लासरूम में. It is quite obvious that long-term memory is of great importance to us as teachers.
We are naturally interested in long-term information is organized, how it is retrieved, and how forgetting happens. But no less important is the working memory system. Why is it important? Especially when it is so small and lasts only a few seconds? There are at least two good reasons. One, to do with individual differences in the efficiency of working memory, and the other, to do with the benefits of automaticity. Automaticity मतलब जो automatically आप withdraw कर सकती हैं, आप draw कर सकती हैं अपने अंदर से. As we saw earlier, everything we learn has to pass through the working memory system. On each learning occasion, the information that is being presented and relevant prior knowledge have to be present in working memory. The two have to be manipulated, so eventually new knowledge is added to long-term memory. But if a child has a lower working memory capacity, the whole process will be impaired. अगर आपका स्क्रीन छोटा है, आप कम इंफॉर्मेशन देख पाएंगे. New knowledge will have fewer associations with the existing knowledge, less can be absorbed, and less is therefore available to recall the next time around. Over time, learning suffers. Thus, the working memory system can potentially become a bottleneck for learning. It sounds reasonable, but does this really happen? There is enough evidence that it does. At any given age, students vary greatly in their working memory capacity, and this variability is related to their performance on academic work in school. Children with lower working memory capacity usually have difficulty with schoolwork. Susan Getacall and her colleagues in the UK have studied the connection between working memory and academic performance among children in great depth. They have found that working memory capacity increases with age till students are about 12 to 15 years old. Among students of the same age, it is strongly correlated with reading, writing, and mathematical ability. जुगजीत सर वहीं आ गए अपने गुड स्कूल में. राइटिंग और मैथमेटिकल एबिलिटी पे आ गए ना हम भी. बिल्कुल बिल्कुल. ये घूम फिर के यहीं पे आ जाते हैं रीडिंग पे. आप कोई भी चीज करेंगे, अब आप देखिए छोटा सा जो एग्जांपल है लॉन्ग टर्म मेमोरी वाला और वर्किंग मेमोरी वाला, ये भी रीडिंग पे ही होता है. जब आप रीड कर रहे हैं आपका एक पेज खुला होता है और एक पेज में जितना आप देख सकते हैं वही तो देख पाएंगे ना. इंटरेस्टिंग है ना ये चीज. और अगर एक पेज में आप बेसिक उसने काल ने बताया था ना शासकों को इन जी द डोर टू डोर बुक स्टोर जी के पढ़ो और न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ेंगे. हाँ, न्यूरल नेटवर्क बनेंगे. ये वही आपने बहुत अच्छा एग्जांपल ड्रॉ किया संडे स्कूल से. पढ़ो तो न्यूरल नेटवर्क्स बनेंगे और हम जितना पढ़ते चले जाएंगे उससे क्या होगा, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी बढ़ती चली जाएगी, जिससे ब्रेन सुपर ब्रेन बन जाएगा. और सुपर ब्रेन कैसे बनेगा? जब ज्यादा पढ़ोगे ना. इसलिए हम कोशिश करते हैं आपके साथ पढ़ें, और यही मतलब है ब्रूइंग नॉलेज का, कि आप और हम नॉलेज ब्रू करते रहें. ये छोटा सा फैक्ट्स मैंने आपके व्हाट्सएप में डाल दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है. अमंग स्टूडेंट्स ऑफ द सेम एज, ये देखिए, इट इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी. आप और हम रीडिंग राइटिंग बहुत लगातार कर रहे हैं. अब मैं यहाँ पे पॉज करूंगा और आप लोगों से सवाल पूछूंगा जो हमारे पास तकरीबन एक साल से आ रहे हैं. हम में से कुछ लोग हैं जिनका एक साल पूरा होने वाला है हमारे साथ. कौन है? सुमन मैम, आपका अबाउट 1 ईयर पूरा होने लगा है हमारे साथ. यस सर. तो आप एक साल में डू यू थिंक यू आर एबल टू रीड बेटर? यस सर. क्या आपको क्या बदलाव नजर आया? आप क्यों आती हैं हर फ्राइडे को इस सेशन में? सर एक्चुअली ये है कि वैसे तो रीडिंग का टाइम नहीं निकल पाता. अगर हम इंटेंशनली कहें तो बहुत बिजी स्केड्यूल है थोड़ा, उसकी वजह से नहीं होता. बट
अब ये हो गया कि हाँ क्लास लगानी है तो लगानी है, और वेट भी रहता है कि फ्राइडे हम क्लास लगाएंगे तो बैठ के read करेंगे। अच्छा, और जब अब जैसे अभी हम आज पढ़ रहे थे वर्किंग मेमोरी के बारे में, जो स्क्रीन पे आता है या जो आपके पेज में आता है, जो आपके ध्यान के एकदम आगे आता है, क्या उसको आप पहले से कुछ बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर सकती हैं? ये सर कुछ लाइंस हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो हम मतलब रिकॉल करते हैं उस टाइम। रिकॉल कर सकते हैं, बहुत अच्छा। और यही मेन काम है जिसको वर्किंग मेमोरी कहते हैं। जो आप रिकॉल कर लेते हैं ना समझ में, उसको वर्किंग मेमोरी कहते हैं। और हमको वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी बढ़ानी है। जो जीनियस होता है उसकी वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी बहुत बड़ी हो जाती है। सो हमारा एफर्ट ये है कि हम रीडिंग राइटिंग से जो आपकी वर्किंग मेमोरी है उसकी कैपेसिटी बढ़ाएं। अब मैं एक सवाल पूछूंगा ललिता जी से। ललिता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। So after that, Swati, please unmute if you can unmute. Good evening, sir. Good evening, Swati. Swati, we have now been reading for a few months, and you have been quite regular. So do you think आपकी वर्किंग मेमोरी कुछ इम्प्रूव हुई है? Yes, sir. सर हर क्लास में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है सर। बहुत अच्छे। तो वर्किंग मेमोरी क्या होती है? जो नई चीजें आती हैं उस वक्त उसमें से कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है, वो वर्किंग मेमोरी होती है। यस सर। आप संडे को भी आती हैं, ठीक है, आप ड्रॉ जी भी सर। करती हैं, आप राइट भी करती हैं। ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जब हम रीडिंग राइटिंग करते हैं तो हमारी मेमोरी इंप्रूव होती है, क्या ये सही है? आपको ऐसी फीलिंग आ रही है? यस सर। क्या आप में कोई ऐसा बदलाव आया क्लास में जब आप जाती हैं? कोई हाउ डू यू फील? 6 महीने पहले आप क्लास में जाते थे, अब आप फिर जाते हैं, आपको कोई हाउ डू यू फील? कुछ बदलाव आपको महसूस होता है? सर पहले क्लास में जाते थोड़ा नर्वस फील होता है सर, अब नहीं होता। बहुत अच्छे। तो ये पहला स्टेप है। इसका मतलब है आपकी वर्किंग मेमोरी इंप्रूव हो रही है, आप में और कॉन्फिडेंस आ रहा है। मैं यहाँ पे पॉज करूंगा और आपको एक दोबारा ले जाऊंगा आज अपने लर्निंग मैप पे, बिकॉज वो बहुत जरूरी है और मैं उसको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आपको। ये हमारा लर्निंग मैप है, इसको मैंने लर्निंग मैप बोलना शुरू कर दिया है। तो अगर हम देखें, हम ये सब चीजों के लिए स्कूल जाते हैं और ये सब चीजें हम तब कर पाते हैं जब हमारी वर्किंग मेमोरी इंप्रूव हो जाती है। छोटा सा मैं एक एग्जांपल दूंगा। आपके माइंड में होगा कि यू शुड बी क्लीन, यू शुड बी एबल टू मेक अ डिसीजन, आपका माइंड भी मोर एब्जॉर्ब करे, आप बेहतर कम्युनिकेट कर सकें, आप रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड कर सकें। ये सारा कुछ आप इकट्ठा करते हैं एक ही क्षण में, एक ही फ्लैश में, एक ही स्क्रीन में। और यही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि हम स्कूल क्यों जाते हैं। नाउ यू हैव कम हियर, ऑफ कोर्स यू आर बिकमिंग अ गुड सिटीजन बिकॉज यू आर पिकिंग अप बेस्ट प्रैक्टिसेस। यू हैव कम हियर, यू आर लर्निंग हाउ टू मेक डिसीजंस, यू आर लर्निंग ऑल दीज थिंग्स। सो वर्किंग मेमोरी बहुत कॉम्प्लेक्स है। टू लर्न एंड टू एब्जॉर्ब, you can only do it by reading, reflection, and cultivating relationships. So classroom में आप relationship जैसे आपकी improve होती है, आपकी reading और reflection improve होगी. Let's go back to the book. Gathercall goes as far as to say that when a student is facing academic difficulties, which are not due to emotional or behavioral problems, one invariably finds his working memory capacity is significantly lower than the average of his age. This suggests a strong casual role for working memory in school performance. Recently, Gathakal and others did a very detailed study of 5 to 6 year old students who were having trouble with schoolwork and how low measured working memory capacity and had low memory measuring capacity. The children were observed very carefully in their natural classroom settings. And every time they had difficulty with some task, the situation was analyzed to see how the working memory system was acting as a bottleneck for learning. These things you should observe in your class, because whole idea is, like I told Swati, when you go to the class, you go with
a new confidence. Why you go with a new confidence? Because you are learning all these things here which you can take to your class. Here are examples of specific difficulties that children had. Following a series of instructions from the teacher, they would forget what they had to do all along the way. I'm sure ये आपके साथ होता है. Copying information from the board, they would lose their place and leave out words. I'm sure ये भी आपके साथ होता है. Listening to stories, they would miss some parts while trying to understand other parts. Thus, their comprehension and long-term memory for the story would be poor. I'm sure you see this in your class every day. Now, of course, these were very young children, but you can see that as time goes on, they are going to find themselves more and more at disadvantage in the learning process. Based on Gathakol's research, a set of interventions have been compiled for students working memory deficit. These suggestions can be summarized in a simple way. So ये आपको एक छोटे से तरीका दिखा रहे हैं क्लास में कि आप लर्निंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और उनकी वर्किंग मेमोरी बच्चों की कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. ये जो सुझाव है मैं आपको चैट बॉक्स में दे रहा हूँ, ब्रूइंग नॉलेज चैट में आ गया. सो अब सुझाव पढ़ते हैं. Look out for signs of overloaded working memory systems in children. This section has given you an idea what the signs may be. Evaluate the work you give them for its load on working memory. If the load is high, try and break up the work into smaller parts. Write all instructions down, use familiar material, and encourage them to use rehearsal or paper and pencil as memory aids. So they have tried to explain how you can use this practically to improve working memory in your classroom and expand the thought process of the child. Automacity, a special application. Many adults have had the experience of learning to read and write a new language. आई एम श्योर आप लोग भी एक भाषा सीख रहे हैं, आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये एक्सपीरियंस हो रहा है. ये आपकी न्यू लैंग्वेज होगी बिकॉज आपकी मेन लैंग्वेज हिंदी है. इफ यू हैव यू नो that in the beginning each letter of the word you want to read takes time and effort to decode. While you are decoding each letter, you need to keep the earlier letters in working memory so that you can string them together to read the whole word. ये स्क्रीन आपको हम क्यों दिखाते हैं इस क्लास में? This is a very unique method we use. आप या किताब पढ़ सकते हैं या आप किताब सुन सकते हैं, बट हमारे यहाँ आप किताब देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और इमेजिनेशन डीपर कर सकते हैं. तो इसमें क्या तरीका है लैंग्वेज सीखने का? While you are decoding each letter, you need to keep the earlier letters in working memory so that you can string them together to read the whole word. Often, by the time you have reached the third or fourth letter, all your processing capacity is taken up by the decoding. So the previous letters have fallen out of working memory. Now you have to go back and scan the word again and so on. This makes the reading process slow and painstaking. So this is what is happening to us. We're trying to do slow and painstakingly. But with practice, the decoding becomes more automatic. That is, needing less conscious effort. I'll pause here. आप लोग सोच रहे होंगे हम अब हिंदी में कम बोलते हैं और हम हिंदी की किताब यहाँ नहीं पढ़ रहे. हम हिंदी की किताब संडे को पढ़ते हैं और यहाँ हम इंग्लिश की किताब आपको पढ़ने की कोशिश करने को कहते हैं. मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा. थिंक, क्या आपको हमारी पेस, डू यू फाइंड आवर पेस कंफर्टेबल? यस और नो? Our method of reading, do you find it comfortable? You can type in the chat box, yes or no. Or you can unmute and say yes or no. You can give a emoji with the thumbs up if you feel it is okay. Are you able to pick up some English language? Because some of us have a Hindi medium here. आपके यहाँ आने से कुछ आप English pick up कर पा रहे हैं? Thank you, Sandeep. Anyone else? Do you think Reena ji good?
you are picking up some English. इसका मकसद ही यही है इस सेशन का, ब्रूइंग नॉलेज का, कि हम अनजाने में भाषा सीख जाएंगे और हम कोशिश करते हैं ऐसी किताब पढ़ें जो आपको प्रोफेशनली हेल्प करे, जो आपकी लैंग्वेज इंप्रूव करे, और तीसरा आपको क्लासरूम के तौर तरीके समझाए. Jugiv sir, you want to add something here? नहीं, I mean we can see the progress, right? स्वाति ने कहा कि शुरू में मतलब नर्वस होती थी, so it's a process. You know, you got over that. Now you come here. Now you know आप concentrate करोगे और आपके पास आपके belief होगा कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, and that's how it will happen. अब आगे पढ़ते हैं. Thus, reading becomes faster and more effortless, at least at the level of the words. Now, working memory can be used to store earlier words of each sentence while you are reading later words, so that you can integrate information as you read and make sense of sentences. Again, if you have a good vocabulary, which means that your long term memory has the meanings of many words and phrases encoded in it. Each word oblique phrase can be processed relatively quickly. Thus, even a long sentence containing big words and several phrases and clauses can be easily understood because we are now reading whole words or phrases at a time. Automaticity. Automatically नहीं है word. Automaticity refers to the ease of processing that comes about with practice, when larger and more chunks of information can be processed in a given time within working memory. One can also see the advantages of automaticity in the mathematics class. Suppose the student is doing word problem. Jay has rupees 45 and his sister has rupees 35. Together, they invest their money in a scheme that gives them a profit of 320. How should they divide the profit? Let's go ahead. It is useful to get the students to solve these problems mentally, thinking aloud as they do so, because it gives them and you a real feel of working memory. If they know how to solve this problem, they may first try to reduce the ratio. 45 is to 35. They must remember that 5 into 9 is 45 and keep the number 9 in mind while dividing 35 by 5. By the time they get the answer 7, they may have forgotten 9. When they add the 2 to get 16 and divide 320 by 16, which requires them to remember 16 into 2 is equal to 32. Meanwhile, keeping both 9 and 7 in mind. By the time they get the answer 20, 9 and or 7 may be lost. Now they must multiply 9 by 20 to get 180, by which time 7 may be lost. And then 7 by 20 to get 140, by which time 30 may be lost. And also perhaps the name Jay. During all this, they must also keep in mind the method to be followed at each step. In fact, it seems nothing short of a complex miracle that a student can do such a complex task at all. Where can automaticity help this process? The answer is almost at every step. If students can immediately and with minimal consciousness processing divide by 5, add small numbers, divide by 16 and multiply by 2, it is not likely they will forget any of the relevant information in between. It is only when such operations are laborious and heavily dependent on conscious processes the working memory will be overloaded. For example, if you divide 45 by 9, the student has to recite the tables from the beginning or repeatedly add 9 to itself 5 times. Almost certainly there is no space for anything else in the working memory desk, and things will fall off. Here then is a good reason to encourage our students to memorize certain number of facts or to become so familiar with them that they are automatically retrieved. आप पहाड़े याद क्यों करा देते हैं? ताकि उसको 45 पहुंचने के लिए 9 प्लस 9 को 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 ऐसे नहीं करना पड़ता.
ऑटोमेटिकली रिट्रीव हो जाता है. The same is true for reading fluency, familiarity with vocabulary, and the use of procedures. In India, we probably suffer from a surfeit of drill and memorization. The point is not to limit learning to those memorized facts, but to use them as a convenience to allow our higher order thinking to occur more smoothly. So Jugjeev said it's an important point, which means memorizing is actually doing you good. It's building your long-term memory. That's what we are coming out from here. The curriculum must be created in such a way that interesting and challenging material is the main focus, while drill remains a necessary support. So far, we have talked about interesting and intelligent uses of our memory system, but it would be incomplete not to address the issue of memorization for examinations, as it is such a reality in school. This is very interesting. So let's take some notes from here. So we'll just take this, and I think this is an important part of today, which I will leave here for you. So read it. It's actually ended up in one long text paragraph. So just try and decode it. We will take a pause here. We will see how I am studying happens, how memorization is done, how students try to recall. We will do that in the next session, which will be next time. So I will create a bookmark here, and we will add this bookmark. Can anyone shout out the date next time? 22nd. Yeah. So actually the number that you put up of that lady was actually very easy to remember because there was a pattern, Yeah, there's a pattern in the number. right? 9 and then one just reducing till Yeah. 0. So actually very simple if you figure out the pattern, and Yeah, that's the yeah. whole point of putting stuff from short-term Working memory, memory. memory to long-term memory to figure out the connection, right, with the pattern. So I'll And put this on, you given the notes. I think it may help someone. You mentioned the pattern. You can see now. The pattern is in your yeah, screen, WhatsApp. Anything else you yeah. want to put out, Jugjeev sir, from today? So it's just the because the working memory is small, and even if it's relatively bigger for some children versus the other, or some adults versus the others, still has limitations. So that is the reason why you don't teach continuously without checking कि समझे या do some practice before. That's the reason, because you're trying to teach in short bursts, because working memory is limited. So you have to teach something, make the connections, help try and move kids from that working memory to the long-term memory. You ask questions, you quiz, you do tests, and you ask them to practice so that things move from the working memory to long-term memory. But your ability to store is limited, so that's why you have to do it in chunks. Jugjeev say this is called bite-sized learning. Yes, जैसे you have bits and bytes yes, in your computer yes. line coding, so this is called bite-sized Exactly. learning. मतलब Exactly. जितना आप बाइट कर सको आप उतना सीखो. आप फिजिकली देखिए मुंह में जितना खाना भर सकते हो उतना खाओ. ओवरलोड करेगा तो या बाहर गिरेगा या आपका चोकिंग हो जाएगा. So this is the concept behind it. So I mean, as it's said, that you have to sort of determine when you're teaching what is the ability of your class to absorb this, or how much they can do at one shot. Right? Absolutely. So and ability of every child is different, every class is different, every community is different. Yeah. सो टीचर के पास मेन चीज ये है कि जब टीचर क्लास में पढ़ाए वो एबिलिटीज को समझे और उस हिसाब से पढ़ाए. Yeah. बहुत अच्छे. आज की कहानी सुने जुगदीप सर, आप पढ़ेंगे आज की कहानी? चलो पढ़ो. Okay. टोनी की कहानी पढ़ो. The deaf man and his sick neighbor.
A man had been losing his hearing for some time, but was too proud to admit his debility and continued to pretend that nothing was wrong with him. One day, a friend bumped into him outside his home and told him that the old man next door had taken ill and that it would be kind to pay him a visit, as he had no relatives to drop in on him. The nearly deaf man somehow made out what his friend was telling him and promised to visit his neighbor that very same day. How was he going to approach his sick neighbor? Wondered the deaf man, especially now that he had become ill and weak and likely able to speak only in a whisper. But there was no way out of it. Custom decreed that he pay the old man a visit and inquire after his health. He decided that he'd decipher what the patient was saying by reading his lips and respond accordingly. Nevertheless, just to be on the safe side, he prearranged his questions in his mind and his neighbor's probable answers accordingly. He decided that when he asked, "How are you feeling?" the sick neighbor would probably say, "Thanks, thanks be to Allah, I am surviving." Then he'd say to him, "That's wonderful, thank goodness," and continue. Why did you say, what did you have to eat today? The neighbor would probably reply, "I had lovely vegetable soup with a glass of cooling sharbat," to which he would respond, "Bon appetit, how wonderful." In addition, he would ask, "Which doctor has prescribed your medication?" And the patient would probably tell him the name of one of the local doctors, to which he'd confirm, "Fantastic, he is the best in the trade." Thus, he was encouraged by his plan and immediately went next door to pay his visit. He sat next to the old man's bedding, which was spread out on the floor, and kindly asked him, "How are you feeling, my dear neighbor?" "I'm dying," moaned the sick man. "Thank God," the deaf man said jovially, and continued with his next question, which he had duly prepared. "What did you eat last night?" "Poison," retorted the old man, already upset by the first answer. "Bon appetit," deaf man responded obliviously. The sick man, made even more upset by the last comment, bit his lips to stop himself from swearing at his annoying visitor. The deaf man, though, continued with an inquiry. "Which doctor is treating you?" "Azrael, the angel of death," snapped the sick man. "May he be blessed. His presence is always good news. Whenever we visit, whenever he visits, whoever he visits is cured of all his pains and aches forever." Unaware of the damage he had done to his sick neighbor's state of mind, the deaf man took his hand and shook it firmly before taking his leave, believing he had done his neighborly duty and brought the sick man much joy and relief. Sorry, I was finding it too funny. क्या आया हमारे दिमाग में? वर्किंग मेमोरी इसके साथ जरूर कनेक्ट होती है. सोचो. Need to start with, he should be having a hearing aid. बट जुगदीप सर उस जमाने में हेयरिंग एड नहीं थे. Okay. जब ये कहानी लिखी गई है तब हेयरिंग एड. कुणाल, मैंने बुकमार्क आपको भेज दिया. आप प्लीज इसको डाल देना ब्रूइंग नॉलेज में. Kunal, you just got the bookmark. Just transfer it to Brewing Knowledge, please. Yeah. So, Jugdeep sir, next week we will read Chinese and Greek painters. Now, let's go back to the session and ask people कि इस कहानी का क्या टेक अवे है इस रूमी स्टोरी का. और ये हमारे साथ
रोज होता है बाय द वे। हम जो बोलते हैं कोई सुनता नहीं है। पीपल अपीयर डेफ ना, they don't connect with your emotions. There is very little empathy. So when you see situation like this, you have to understand how to handle such a situation. अब क्योंकि वो पहले से अपने दिमाग में जजमेंटल होके जाता है, वो ये पूछेगा मैं ये जवाब दूंगा। आप क्लास में जाते हैं, मैं ये बताऊंगी, वो ये समझेंगे और ये सवाल उनको दे दूंगी। अब आप सोचिए, ये ऐसी सिचुएशन है, इसमें डेफनेस भी है, सिकनेस भी है। वो बच्चे बेचारे समझ तो पा नहीं रहे, सिक तो हो गए ना, और डेफ हो, वो सुन ही नहीं पा रहे आप क्या बता रहे हैं, आप उनकी नहीं सुन पा रहे। तो इस कहानी को अगर अपनी क्लास में ले जाएंगे तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा इस कहानी के साथ। दैट वी हैव टू हैव कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड सेंसिटिविटी टू ओवरकम एवरी पॉसिबल लिमिटेशन। जुगजीत सर, डज दैट हेल्प? हाँ जी, I mean he had a plan, he knew he'd have a problem, उसने प्लान बनाया था, but उस पर then he didn't have a plan B. Yes. So in every child is plan B, C, D, E, F, G. हाँ, Now you can well understand कि टीचर क्लास में कैसे प्रिपेयर होके जाएगी और क्लास में क्या होता है। अब हम सवाल पूछेंगे टीचर से, कोई भी कुछ बोलना चाहे, आपकी बारी, क्योंकि घंटी बजने का समय आ गया है। मनीषा मैम, मनीषा मैम तो सैर करने चली गई। स्वाति, यस सर। कुछ कहना चाहें, कुछ पूछना चाहें, कुछ आज का क्या रिफ्लेक्शन आप लेके जाएंगी क्लास में से? आपको क्या दो वर्ड अगर मैं पूछूं जो आपके माइंड में, जो आपकी वर्किंग मेमोरी में आ गए आज की क्लास से, कुछ रिकॉल कर सकती हैं? सोचो स्वाति, आज की हाईलाइट क्या होगी क्लास की? सर मेमोरी को लेकर। जी, मेमोरी को कैसे बढ़ा सकते हैं, मेमोरी की कैपेसिटी होती है। अब जब बच्चे छोटे होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होती है, और आप क्लास में जब जाएंगे तकरीबन 11-12 साल के बच्चे केपेबल हो जाते हैं। ये बेसिक हाइलाइट्स थे आज की। तो इसलिए टीचर को ये विभिन्नता देखते हुए कैसे क्लास में जाना चाहिए। ऐसे ही रूमी की कहानी आई, वो डेफ मैन अपने अंदर ही सवाल जवाब करके क्लास में सवाल जवाब करके आ गया, ना दूसरे ने समझा। टीचर, अब इसमें देखिए, अगर एक टीचर और एक स्टूडेंट हो इस कहानी में, फिर देखिए क्या उसका मतलब निकलता है। और ये वही चीज चली जाती है कि वी हैव टू डू थिंग्स इन बाइट साइज मेथड। दैट आई थिंक इज द बेस्ट टेक अवे फॉर टुडे, कि छोटा छोटा करो, स्टेप बाय स्टेप चलो, छोटी छोटी चीज समझाते जाओ, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते चले जाओ। संदीप कुमार जी, have कुछ? plan B. सॉरी, जुगजी, यू आर सेइंग समथिंग? Yes, have a plan B and a plan C. या एब्सोल्युटली, हैव ऑप्शंस व्हेन यू गो टू अ क्लास। अब ऐसी सिचुएशन ना आए वो बेचारा मर रहा है और दूसरा वाला उसको समझ नहीं पा रहा। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। संदीप कुमार जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? गुड इवनिंग सर। सर मैं एक क्वेश्चन था मेरे माइंड में, काफ़ी टाइम से मैं जैसे आपकी क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ, मैं यहाँ रेगुलर मैं ये क्लासेस होती अटेंड कर रहा हूँ, बट एक मेरे माइंड में एक डाउट है सर। जी हम क्लास के अंदर जाते हैं सर, टीचिंग भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, बट रीडिंग्स जो है ना अभी भी बच्चों के अंदर, ठीक है वो करवा रहे हैं, क्लास के अंदर कर लेते हैं बच्चे, बट जी उतना इंटरेस्ट नहीं है अभी भी बच्चों के अंदर, वो उतना टाइम कर पाते जितना टाइम हम दे रहे हैं। क्लास के अंदर वर्क हो गया, उतना टाइम उन्होंने इंटरेस्ट से कर लिया, नहीं किया फोर्सफुली कर लिया उन्हें, बट लेटर उनको बोला जाए कि रीड करना है या कुछ करके लाना है, उनका कोई वो नहीं है सर। उस चीज को कैसे किया जाए सर? ये चीजें डे बाय डे कम होती जा रही है, बढ़ नहीं रही है। बहुत अच्छे। अब आप देखिए, हम यहाँ 10-12 लोग ही हैं, जी सर। और
ऑथर एक ही बनता है, रस्किन बॉन्ड एक ही बना। जी सर। ठीक है, आप इस चीज की चिंता मत करें। अगर आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, 2 भी रीडर बन जाएंगे, वो सक्सेस रेट है आपका। जी सर। क्लास में ये तो 1-2 ही जीतते हैं सर। जी सर, ये तो है सर, ये हर क्लास में। बट मेरा ये है कि अगर उस क्लास में अगर मेरे पास 35 स्टूडेंट इस क्लास में अगर बच्चे हैं, तो उनमें से अगर 10-12 बच्चे अगर ऐसे रीडर होना अच्छे, तो मुझे पता है कि सर एक क्लास का जो परफॉर्मेंस है वो अलग ही होगा सर। हर रोज और मैं ये चीज ट्राई करता हूँ। मैं हर रोज कम से जी, कम 8-10 बच्चों को मैं हर रोज रीडिंग का उनको दिया जाता है कि आपने रीडिंग करना है। उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो बच्चे थोड़ा स्लो लर्नर है उनको भी दिया जाता है, बट अब उतना धीरे हम कहते हैं कि बाद में करेंगे वो उतना ही टाइम कर पाते हैं जितना टाइम दिया जा रहा है। जी, हमारा ये होना चाहिए कि उनको जैसे घर पर जाकर भी वो रीडिंग करें। उनके पास थोड़ा अगर वैकेंट लेक्चर है कोई, उसमें वो करे रीडिंग। हम्म, वो चीज नहीं है। अब खुद स्टूडेंट के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, वो उतना, एक तो उनको कहा जा रहा है कि आपने करना है, वो उतना ही टाइम कर पा रहे हैं। इस नहीं तरह का आप सर बताइए। बहुत अच्छा, नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा कहा। इसका एक ही तरीका है, और मैं कहता हूँ हर हिंदुस्तान में जब तक बच्चे के घर में पढ़ने का माहौल नहीं होगा, तो जी उसका सर। आप और हम कुछ नहीं कर सकते। जी सर। इसका एक तरीका जो मैंने तजुर्बा किया है और जो मैंने ग्राउंड और फील्ड में काम करके किया है, कि टीचर के साथ पढ़ते चलो कि टीचर्स को पढ़ने का मजा आए। जी सर। टीचर बच्चों के साथ पढ़ते चलें कि बच्चों को सुनने का मजा आए। और इस जी सर। साइकिल को इम्प्रूवमेंट लाने में 8-10 साल लगते हैं। ये जी इतनी सर। छोटी चीज नहीं है कि आप यहाँ 1 साल इस क्लास में आ जाएंगे, उससे कुछ नहीं होगा। जो जी रीडिंग सर। है, बहुत 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 ही कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। अगर आप आज का सेशन देखेंगे, जी वर्किंग सर। मेमोरी से लेके कितनी मेमोरी रिट्रीव करनी पड़ती है, और जी रीडिंग सर। सेंटेंस समझने के लिए कितना कॉम्प्लेक्स है। जी सर। वर्ड समझना ही दूर, सेंटेंस समझना तो बहुत दूर की बात है। जी जी सर। जी सर। इसका एक ही तरीका है, आप क्योंकि इस चीज को सेंसिटिव हैं, आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड स्टार्ट, दैट यू जी सर। फील दैट चिल्ड्रन शुड रीड। आई थिंक दैट इज itself a major achievement on your part to have come to that realization. On जी next सर। part, what I would recommend, what you can do whenever you have time in your जी school or after school, sit down with 2-3 children and read with them. This is a small example I can give you. श्योर सर। हाँ, रीड योर सेल्फ। आप यही किताब पढ़ते हैं जो हम आपके साथ पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ दें जी आप। सर। 2-3 बच्चे जो आपको नजर आते हैं, बोलो हम इकट्ठे बैठ के पढ़ेंगे। जैसे हमने ये लर्निंग कम्युनिटी बनाई, रीडिंग कम्युनिटी बनाई, आप एक जी सर। अपने इर्द गिर्द एक कम्युनिटी बना लें। आप में से जी हर सर। एक 3 बच्चों के साथ भी अगर पढ़े ना, देखो जी कितने जी सर। पढ़ जाएंगे, मतलब 30-35 बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे। दैट्स हाउ वी कैन डू इट, दैट इज अ सोल्यूशन। जी सर, थैंक यू सर। 2-3 children who can sit down with you once a week, who just लाइब्रेरी में कभी भी चले जाएं, आओ चलो हम लाइब्रेरी चलते हैं, आई एम श्योर हफ्ते में 20 मिनट तो निकल आएंगे कभी। जी सर, निकल जाएंगे सर। आप वही 20 मिनट निकाल के 2-3 बच्चों को बोलो हम हर हफ्ते में 20 मिनट के लिए लाइब्रेरी में मिलेंगे। जैसे हम यहाँ हर हफ्ते 45 मिनट्स मिलते हैं ना, अब उन श्योर बच्चों को सर। 20 मिनट हर हफ्ते मिलो, और हर एक टीचर ये कोशिश करे, बिलीव मी, ये बदलाव आएगा। जी सर। श्योर सर। सर, इस स्कूल थैंक में यू। लाइब्रेरी पीरियड होता है? जोगीव हाँ। सर। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ संदीप सर, आपके स्कूल में लाइब्रेरी पीरियड होता है? हाँ जी जी सर, जी सर, होते हैं सर। सभी क्लासेस में सर तो लाइब्रेरी। हाँ जी, तो बच्चे उसमें लाइब्रेरी क्या लेक्चर है करते वहाँ पर सर। बच्चे मोस्टली या तो न्यूज़पेपर या बुक रीडिंग है वो करते हैं सर बच्चे। वहाँ पर लाइब्रेरियन है, उनको बुक इशू कर देते हैं सर। बच्चे करते हैं, रीडिंग भी करते हैं वहाँ पर। बट उतना नहीं है कि वो कितना इंटरेस्ट से कर रहे हैं। वो नहीं है कि एक तो इंटरेस्ट होना बच्चों के अंदर कि हमने करना है। लाइब्रेरी के लिए उनका नहीं है जितना वो स्पोर्ट्स के लिए कि हमें स्पोर्ट्स में ले जाओ, लाइब्रेरी मत लेकर जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि नहीं, हमने रीडिंग है तो हमने रीडिंग करना है। आज न्यूज़पेपर रीडिंग करना है तो हमने रीडिंग करना है। आज बुक रीडिंग करना है तो हमने वो करके आना है कुछ ना कुछ। वहां पर 35 मिनट 40 मिनट का टाइम है। वो चीज होनी चाहिए सर। जैसे अब यहाँ पर इस क्लास में आते हैं ना, तो एक है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमने यहाँ पर कुछ सीखना है। वो चीज होनी चाहिए बच्चों के अंदर कि हाँ नहीं, हमने करना है। वो चीज नहीं आ रही है नजर कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर। ये आपका, मैं आपको तरीका बताता हूँ। जी सर। ये पुराना तरीका है रीड अलाउड करने का। जी ठीक है, सर। कोई लोग सुनते अच्छा है, जैसे आपने कहा कोई खेल में इंटरेस्ट रखते हैं, कोई हाँ जी देखते सर। हैं, कोई सुनते हैं, कोई एक इनर
सेंसिटिव फीलिंग से सीखते हैं। जी सर। मेरा जो बेसिक तरीका है, मैं वो ये कहता हूँ कि रीड अलाउड करो। और रीड अलाउड हमारे यहाँ होता नहीं है इस जी कंट्री सर। में। हमारे यहाँ क्या होता है, रिमेंबर अलाउड। जी सर। और अगर हम रीड अलाउड करें और ऐसे करें कि सब जोर जोर से पढ़ के आपके जी साथ, सर। that's another way of solving this. In your library period, all 10 of you pick up the same book and read it. जी सर। If I go back to my school days, I don't know if Jugjeev remembers, that's what used to happen in our English book. R.P. Devgan sir took us to the bookstore. We got 30 copies of To Kill a Mockingbird. And we read To Kill a Mockingbird in an English class in our term. Do you remember, Jugjeev sir? हाँ जी, हाँ जी। सो द थिंग इज दैट इसमें एक होता है इंटरेस्ट और एक होता है समय, राइट। आजकल कंपेयर टू आवर टाइम समय लोगों के पास कम रहता है क्योंकि एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई हैं। तो आपको जी सर। बच्चों को समय देना पड़ेगा कुछ करने के लिए जब खुद वो डिसाइड करें। सेकंड इज इंटरेस्ट। और जी सर। इंटरेस्ट आजकल सब चीज पे, सब मुद्दों पे किताबें हैं, ठीक है। सो अगर हाँ जी। जैसे कोई बच्चा है जिसको फुटबॉल में इंटरेस्ट है तो हाँ जी बहुत सर। किताबें हैं फुटबॉल स्टार्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल। So जी सर। sometimes it's also interest of question of matching the interest and शुरू करने का शुरू में शुरू करवाने वाली बात होती है। जी सर। जब तक आपने ट्राई नहीं किया आपको पता नहीं चलेगा। मैंने तो ऐसे ही किया था। मतलब मेरे को किताब मिली, मैं बोर हो रहा था, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, मेरे को इंटरेस्ट लगी, उसके बाद आई नेवर लुक बैक। और स्कूल में आई मीन बहुत बारी आई वुड कम, हमारी 20 मिनट की ब्रेक होती थी, उसमें वापस आके 5-10 मिनट किताब पढ़ लेता था। तो जी मतलब सर। इंटरेस्ट का होता है उसमें। तो जी इंटरेस्ट सर। जगाना है, दैट इज द की थिंग, बिकॉज सब्जेक्ट यू नो सब। वन Jugjeev sir, एरिया वेयर यू कैन हम थिंक ऑफ। वहीं पहुंच गए, हमको सबको इंडिपेंडेंट बनाना है। जी सर। जी सर। Good. Thank you. I think that is a nice 5-7 minute of thought provoking discussion. And that is why this session is called Brewing Knowledge. So we will meet next Friday, which is 22nd of August, and keep brewing knowledge. Thank you, everyone. Thank you, Kunal. You shared the bookmark. Thank you for doing that. And God bless you all. From one day to another, become more independent. That's all I can say. That's all for today. Thank you. बाय। Thank you. Bye bye. Bye थैंक यू bye. सर।